Hello children, how are you? I am Sunalika Mishra and today we will do chapter 3 of class 8 Understanding Quadrilaterals, and we will talk about convex and concave quadrilaterals. Now a quadrilateral has 4 sides, 4 angles, these are all in the interior angles, and 2 diagonals. Now this is a convex quadrilateral. This is a concave quadrilateral. It also has 4 sides and these are the 4 angles and the diagonals. This is one diagonal and this is one diagonal. One diagonal lies in the interior of the quadrilateral and one diagonal lies in the exterior. And here this angle, one angle is a reflex angle. It is greater than 180 degrees. Now we will study about the convex quadrilateral in a little detail. Now in a convex quadrilateral, each interior angle is less than 180 degrees. These are the interior angles and the measure of each angle is less than 180 degrees. Then the diagonals, they lie in the interior of the quadrilateral. The diagonals lie in the interior of the convex quadrilateral, and if we draw a line segment, suppose we take 2 points P and S. These 2 points are in the interior of the quadrilateral, and if we join them, then this becomes a line segment PS. This line segment also lies in the interior of the quadrilateral. So line segment joining 2 points that lie in the interior of the quadrilateral also lie in the interior. Also lie in the interior of the quadrilateral. So इसमें 3 प्रॉपर्टीज क्या हो गई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की. ईच एंगल जो है वो उसका जो मेजरमेंट है वो 180 डिग्री से कम होता है. इट इज़ लेस देन 180 डिग्रीज. देन द डायगोनल्स जो होते हैं दे लाई इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, वो अंदर होते हैं, प्लेन में अंदर होते हैं. एंड जो लाइन सेगमेंट है, अगर 2 पॉइंट्स हैं, जो दोनों पॉइंट्स इंटीरियर में ही है क्वाड्रिलेटरल के, जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा वो भी इंटीरियर में होगा. अब हम कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल. दीज आर द 4 एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, एंड वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर दैन 180 degrees. So one interior angle is greater than 180 degrees. Then if we draw a diagonal, this is one diagonal QS, it lies in the interior. but diagonal PR, it lies in the exterior, right?
So second point will be one diagonal lies in the exterior of the concave quadrilateral. एक डायगोनल अंदर होती है, ऐसे QS है वो अंदर होगी फिगर के, और एक PR जो है वो बाहर की तरफ होती है. एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर हम दो पॉइंट्स जो कि अंदर हैं लाइक क्वाड्रिलेटरल के, ये XY, और इनको हम ज्वाइन करते हैं, दिस इज अ लाइन सेगमेंट XY. The points are also in the interior and the line segment drawn is also interior. लेकिन अगर हम एक और लाइन सेगमेंट यहाँ पे है, ये हम लेते हैं L and M. This the points are in the interior, लेकिन जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे वो एक्सटीरियर में हो जाता है. तो a line segment may lie in the interior of the quadrilateral and may not lie in the interior of the quadrilateral. This will be the third difference. A line segment joining two points that lie in the interior of the quadrilateral may or may not lie, may or may not lie in the interior of the quadrilateral. Of the quadrilateral. ठीक है, तो कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल के क्या हो गए प्रॉपर्टीज? एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्रीज से बड़ा होगा, वन इंटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज, एंड वन डायगोनल इट लाइज ऑन द outside of the quadrilateral, and a line segment that joins two points. These 2 points, they lie in the interior of the quadrilateral, but the line segment may lie in the interior of the quadrilateral and it may not lie in the interior of the quadrilateral. I hope you have understood this topic. Thank you.